So, namaskar all of you. ओडिशा एजुकेशन सर्विस जो नुआ स्ट्रक्चर का दिया हमरो तो सेथरे जदि अपन देखिबे सबुठु इंपोर्टेंट कंपोनेंट आपनकर एजुकेशन पेपर रहउची ओके आउ एजुकेशन पेपर जेहेतु एबे पुनी औथरे आग भलिया सब्जेक्टिव करा ही जाइछु तेनु बहुत इंपोर्टेंट हैला आपण बुझिबे कौन क्वेश्चन रो रिक्वायरमेंट आउ तापर ताको लिखिबे जो टाइम हिसाब से सेटा दिया हिच ओके जदि आपण जो नुआ सिलेबस अछि ताको देखिबे एजुकेशन ऊपर ही खाली कंसंट्रेट करूची तो प्रथमे आसिला फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन ता आगुरु राइटिंग स्पीड केते होबा दरकार केते समय आपण देबे लिखिबा पई सेटा आपण माइंड रे रखि दियौ 300 मार्क 150 मिनिट ओके ता माने आपणकर गोटे मार्क को आधा मिनिट दबार अछि तो जो 10 मार्क क्वेश्चन पढ़ला मते 5 मिनिट रे सारिया पे पड़िबो जदि सेटा 25 मार्क क्वेश्चन अछि 12 एंड हाफ मिनिट से सारिया पड़िबो 10 मार्क क्वेश्चन हेले 5 मिनिट रे 12 मार्क क्वेश्चन हेले 6 मिनिट रे से हिसाब रे आपन को लिखिया पे पड़िबो ता माने कोन एथरे आपण एते डिटेल्स रे लिखिबार नै पॉइंट वाइज लिखिबे हेडिंग्स देबे सब हेडिंग्स देबे जदि अधिका मार्क रो क्वेश्चन हेथिबो ताहले सेथरे आपण डायग्राम्स करिका पे देबे ओके तो जोटा जो बैच टा हमें स्टार्ट करिबा संडे दिन रु अगस्त 23 6:30 रु बैच टाइमिंग टा रहउची ओके सो केमती कोन तार स्ट्रक्चर रहइबो काहे कि ना मो एजुकेशन प्रथमे स्टार्ट करी कि सेटा सारी सो कंटेम्पोररी वेस्टर्न थॉट एंड कंटेम्पोररी इंडियन एजुकेशनल थॉट जोटा कि फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन हमर फर्स्ट पार्ट का रहउची ओके एठी देखंतु एटा हला इंडिकेटिव सिलेबस एटा डिटेल सिलेबस त माने कोन से खाली एति के दे देला कि आपनकर कंटेम्पोररी वेस्टर्न एजुकेशनल थॉट पढ़ी है तेणु ता भीतर बहुत गुड रिसर्च अपन जदि आपण बीएड रो सिलेबस काढी के देखिबे सेही थरे आपण पाइ कि कंटेम्पोररी वेस्टर्न एजुकेशनल थॉट रे कोन कोन अछि ओके अपन जतले ऐप को देखिबे ऐप रे जो फोल्डर ता अछि न्यू सिलेबस 2026 सेथरे फोल्डर अछि माइक्रो सिलेबस सेथरे सब पार्ट जोड़ा सिलेबस रो देछि ताको हमें भांगी देछु माइक्रो सिलेबस रे जा भीतर कोन कोन पढिबार अछि सो दैट जो नोट्स ओरिका रहबो जा भी पढा हबो सेगुडा ता हिसाब रे रहबो ओके सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन कंटेम्पोररी वेस्टर्न एजुकेशनल थॉट ओके तो एथरे फाउंडेशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशनल थॉट रहइबो जो थरे मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशनल फिलोसॉफी रहउची एई सब जिंस सेथरे आपन को टिके टिके जानिबार अछि ओके तापरे यूनिट 2 आपन को रहला बेसिक फिलोसॉफिकल कांसेप्ट्स रिक्वायर्ड फॉर वेस्टर्न थॉट एटा बहुत इंपोर्टेंट केना एटा हमें देखिबा बे हमें जो 2 वर्ष आपनकर क्वेश्चन पेपर्स अछि ओपीएससी रो वेबसाइट रे 2012 और 2015 रो तारो टिके क्वेश्चन एनालाइज करबे ताले आपण जान परिबे कि मेटाफिजिक्स एपिस्टेमोलॉजी आउ एक्चुअलॉजी टा भलो रे काई की बुझिबा दरकार ओके तापरे डिफरेंट वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट अछि आइडियलिज्म हला ओके रियलिज्म हला तो ता भीतर तार को डिटेल्स रहबो सब जिंस त दिया अछि नेचुरलिज्म हला pragmatism okay then individually भी आपनकर जॉन ड्यूई प्रोजेक्ट मेथड एंड किलपैट्रिक प्रोग्रेसिविज्म एक्सिस्टेंशियलिज्म ह्यूमनिज्म एंड ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन essentialism perennialism,
social reconstructivism, Marxist educational thought, critical pedagogy, constructivist educational thought, Maria Montessori, Froebel and kindergarten, Pestalozzi, Russell, Whitehead. तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव अच्छे कहीं आपणकर यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए ओके नील एंड डेमोक्रेटिक एजुकेशन ओके इलिट एंड डी स्कूलिंग जोटा कि एबे बहुत तार इंपोर्टेंस अच्छी एनालिटिकल फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन ओके देन कंटेम्पररी लिबरल एजुकेशन वेरियस यूनिट्स गुड़ा मु खाली कहि दउची तार कंटेम्पररी डेमोक्रेटिक एजुकेशनल थॉट child-centered educational thought, activity-centered and experience-centered education, freedom and discipline in Western educational thought, role of teachers in different Western philosophies, concept of learners, curriculum according to Western philosophies, teaching methods, comparative philosophy, thinker book matching, important books जोड़ा thinker concept matching, Western educational thought and modern education, application to the Indian educational context. आरा थर्ड क्वेश्चन पड़थिला कि इंडियन एजुकेशनल थॉट और वेस्टर्न एजुकेशनल थॉट को कंपेयर करिया ओके सेथरा हम ओडिसा रो कॉन्टेक्स्ट रे देखियो क्रिटिसिज्म ऑफ वेस्टर्न एजुकेशनल फिलोसॉफीज ओके तापर जोड़ा इंपोर्टेंट हाईएस्ट प्रायोरिटी थिंकर्स रह गला जोड़ा निहाती हमको जानिया दरकार वेस्टर्न स्कूल्स रे पढ़ियार हाई प्रायोरिटी अच्छी जोड़ा कि घोषिबार अच्छी किछि किछि जिंस सेगुडा कोन रहइबो दीज ऑल ओके आपनकर पूरा माइक्रो सिलेबस टा कंप्लीट हो जाय तो एमिति प्रिपेयर करले कोन से जहा क्वेश्चन भी पढिबो आपण इजीली ताको ओके सॉल्व करि पारि जदि हम देखिबा केमिति क्वेश्चन पढुची तो एजुकेशन पेपर 2012 रो और 2015 रो जोटा ओपीएससी वेबसाइट रे देछि ऑलरेडी तारो सॉल्व्ड कॉपी जोड़ा सॉल्व्ड आंसर्स जोड़ा एते को 9टा क्वेश्चन दिया होची और रे दिया होची माने टोटल 18टा क्वेश्चन दोची ता भितरु आपन को एनी 9टा करिवार अछि ओके तीनटा सेक्शन रो ईच सेक्शन रो तीन तीनटा राइट सो केना सेतो बले 150 मार्क रो थिला तो 50 50 ईच सेक्शन रो करते ए बेजरा 300 मार्क रो हेगला 300 मार्क रो हेले सेम जिंस होबो कोन होना आपनकर ईच सेक्शन रो 100 मार्क हेजी okay each section will be 100 marks okay so प्रथमे आसंतु 2012 रो क्वेश्चन ता देखिबा केमती कोन आपण अटेम्प्ट करिवे राइटिंग स्टाइल कोन केमती रखिबे एगुडा जतला आपे एवरीडे राइटिंग प्रैक्टिस करिबा तो सेतले आस्ते आस्ते आपनकर राइटिंग स्टैमिना ता बिल्ड हे जिवो जदी आपण ऑलरेडी सिविल सर्विस की अलगा किछि एग्जाम पे प्रिपेयर करछन जोता राइटिंग कंपोनेंट अछि ताले प्राय आपण अभ्यास रे अछंती किंतु जदि आपण केवल टीचिंग एग्जाम्स में प्रिपेयर करथले जोठे प्राय एग्जाम्स करिका हमर रोची ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड ताहले आपण को ये स्टार्ट करिया पड़िबो लिखिबा हैना एई 300 मार्क हैला मेक और ब्रेक ओके क्वेश्चन 1 को संतु ऑल एजुकेशनल क्वेश्चंस आर अल्टीमेटली क्वेश्चंस ऑफ फिलोसॉफी एटा ग्रुप ए रो फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन रो तो शॉर्ट काइना एथरे ओके आपण को बहुत कम टाइम मिलियो 7-8 मिनिट अराउंड मिलियो शॉर्ट इंट्रोडक्शन देबे पॉइंट वाइज लिखिबे हेडिंग सब हेडिंग देबे ओके सेटा बहुत ही इंपोर्टेंट आउ तापरे जदी टिके हायर वैल्यू क्वेश्चन अछि ताले चेष्टा करिवे गोटे लॉजिकल डायग्राम करिया पय जेमति एठी जेमति गोटे से देछि गोटे लॉजिकल डायग्राम ता ए लॉजिकल डायग्राम कोन जो डायग्राम ता एक्चुअली परीक्षा पेपर रे आपण करि परिबे ओके बहुत प्रकार डायग्राम आपण देखिबे बहि दिया अछि जोटा कि आपण को बुझिया पे अछि बट सेटा परीक्षा पेपर रे ताको आपण रिप्रोड्यूस कर परिबे हला एटा और रो क्वेश्चन आसिला 1b कि 1 रो और क्वेश्चन डिस्कस इन ब्रीफ द एजुकेशनल फिलोसॉफी ऑफ जॉन ड्यूई with reference to aims curriculum and role of the teacher okay again point wise लेखिबार अछि जेति लेखाइ छै अदरवाइज सबरो समय हबन गुडे जिंसो पचाइथिबो सेही हिसाब रे सब जिंसो को हमहु जस्टिस करिवार अछि ता सहित जेति की
हमें लिखि परिया कथा सेतिकी हमें लिखिबा ओके एंड देन इफ इट इज अ हाई वैल्यू क्वेश्चन ताहले तारा गोटे ओके डायग्राम हमें करि परिबा क्वेश्चन 2 को आसंतु idealism as one of the oldest schools of thought has significantly contributed to the theory and practice of education discuss okay so philosophical foundations to start करिवे जो idealist thinkers western idealist thinkers okay see generally idealism ऊपर पचारछि तो आपण indian idealist thinkers भी दे परिबे okay so बहुत गुडे कंपोनेंट्स आपन को मल्टी डायमेंशनल आंसर ता करिवार अछि आपन गोटे जिंस किछि लिखि देले भलरे सेथरे मार्क्स आसीबनी ओके आपन को मल्टीपल डायमेंशंस किबा मल्टीपल एस्पेक्ट्स कवर करिवार अछि आंसर ओके तापर तार जदि समय मिलला आ जदि सेति की अधिक मार्क रो क्वेश्चन थिबो 5 मार्क क्वेश्चन पे डायग्राम करा दरकार नै किंतु हां 15 मार्क क्वेश्चन पे डायग्राम करा पे पड़ी Question 2 और देखंतु elucidate the educational ideas and ideals of Gandhiji. Point out the influence of Western educational thought, if any, on them. Again, so structure is very important. Paragraph structure रे तो totally हमें लिखि ही परिबन काहे ना जमते मु कहिली गोटे मार्क पे आधा मिनिट मिलुछ हला तेनो गोटे 20 मार्क क्वेश्चन मते पडिबो ताले मते मिलिबो 10 मिनिट्स तक सारिया पे 10 मिनिट्स मु केते लिख परिबो गोटे A4 पेपर सरू सरू 5-6 मिनिट पढुछ 2 पेज मैक्सिमम लिखिबे तेनो ये सब सेही टाइप रो आंसर्स रहइबो 50 मार्क क्वेश्चन आपन को मिलिबो ओके क्वेश्चन 3 को आसंतु व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंजेस डिस्कस ओके सो हेडिंग्स सब हेडिंग्स प्रॉपर एग्जांपल्स फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड एग्जांपल्स फ्रॉम इंडिया examples and data from Odisha also data भी दरकार ओके आउ प्रॉपर सोर्स दरकार सो जहां सोर्सेस हमें यूज करछु सेठी दिया भी एछि से गुडा एवडा सब गवर्नमेंट सोर्सेस गवर्नमेंट ऑफ ओडिसा रो सोर्सेस किबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो सोर्सेस ओके और डायग्राम ता एवरी क्वेश्चन में दिया है सो दैट आपण जानंतु कि डायग्राम ता केमति करा हबो तापर हमें देखिबा परीक्षा रे कोन सब क्वेश्चन डायग्राम करियो दरकार नै किंतु जो क्वेश्चन रिक्वायरमेंट हबो सेठी हम भाबी कोन डायग्राम कर परिबो किंतु से स्किल टा हमर जंती रहबार अछि डिफाइन कल्चर एक्सप्लेन द डिटरमिनेंट्स ऑफ कल्चर डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ कल्चर विथ एजुकेशन ओके कल्चर एंड एजुकेशन एंड टू वे रिलेशनशिप तापरे तो एटा थिला एजुकेशनल फिलोसॉफी रो ग्रुप बी को आसंतु एजुकेशनल साइकोलॉजी क्वेश्चन 4 एक्सप्लेन द टर्म मोटिवेशन एंड इट्स इंपोर्टेंस हाउ विल यू मोटिवेट पीपल्स इन लर्निंग ए लेसन एगुड़ा सब नॉर्मली 16 मार्क 14 मार्क ए टाइप रो 17 मार्क ए टाइप रो क्वेश्चंस उडा सब थिला ओके सेट थोड़ी डिटेल से दिया है क्वेश्चन 4 रो पार्ट बी किंबा और जोटा व्हाट आर द एस्पेक्ट्स इन व्हिच इंडिविजुअल्स डिफर डिस्कस देयर एजुकेशनल सिग्निफिकेंस तनो इंडिविजुअल डिफरेंस ऊपर पचाछि ओके Question 5. What is intelligence? Mention some of the intelligence in use in India. How far is the IQ constant? Five or give a brief account of various methods of measuring personality. So एगुड़ा सब सॉल्व होगी आपनकर ऑलरेडी ऐप रे अछि ताको आपण निज आडू भी ताको एनालाइज करि पारे ओके क्वेश्चन 6
Discuss briefly the factors that are responsible for proper mental health of children. What measures can be taken for improving their mental health? So first हमें education रू start करिवा और education टा complete करिवा. Education टा चलिला बेले other subjects रो test गुड़ा मु upload करते हैं. जंती कि GK रो प्रथम chapter test already upload है सरलन. देखिए भी सेटा. Question 6 or what are defense mechanisms? Describe in brief some of the common defense mechanisms. ଏବେ ଆସିଲା Group C, Educational Administration and Supervision. What is educational administration? State the scope of educational administration. Mention the principles of educational administration. Question 7 or which central bodies shoulder the responsibility of looking after secondary education? Describe their organization and activities. एथर देखंतु आंसर रे बहुत गुडा डेटा देछि. ओके खाली थ्योरी लिखि देले हबनी. एग्जांपल्स दवा पे पडिबो, रिसेंट डेटा दवा पे पडिबो, ताहेले ही आंसर टा प्रॉपर हो. Question 8. Discuss the meaning, scope and principles of supervision. Eight or what are the techniques of supervision? Explain them. तो एटा जेतो आमे जो पार्ट पढी पढी जिबा ओके सेगुडा सेतबेला आमे डिस्कस करिबा. ओवरऑल स्ट्रक्चर टा मु आपनको जणाउची. ओके discuss the various recommendations of different commissions on equality of educational opportunity. Okay, so different commissions रो तांकर recommendation कौन और data करे किछि आपण सेथरे दबार अछि. Okay, so structure टा तार properly बुझिबार अछि. Okay, so that we get the proper marks. Okay, एटा गला 2012 सेमती 2015 रो भी सॉल्व आपनकर. ओके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अछि. तो गोटा ब्रीफ आइडिया आपनको हैला कि कोन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पडुची किबा जेतबेले पैटर्न टा थिला सब्जेक्टिव रो एजुकेशन पेपर रो सेतबेले को टाइप रो क्वेश्चंस पडुथिले. प्राय आपण देखिबे 90% क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस. आउ जो 10% किछिटा किछि recent जिनसो ऊपर पचाउची. ओके से टाइप रो अछि. ओके सो this is the pattern of the questions. last year माने जो तळे 2012 2015 रे जा पडथिले. ओके एबे जदी I'll just show you the आपनकर जो OES रो ऐप अछि से ऐप रे जो फोल्डर सुडा अछि कोन कोन तार कंटेंट केमति कोन तक आपण यूज करिवे. ओके तो
ଆପଣ OES ର ଯେତେବେଳେ କୋର୍ସ କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ତାର ବେସିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା। ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓସ୍, ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ କ୍वेଶ୍चंस, ଟେଷ୍ଟ, 6 मंथ एग्जाम प्लान एगुड़ा सब 2021 बैच रो तार कंटेंट गुड़ा अपन चाहिले सेगुड़ा केना एजुकेशन रो सिलेबस चेंज हेनी, ठीक अछि, तो सिलेबस मोर ऑफ सेम ही अछि। तो एगुड़ा आगुर जदि अपन चाहउछन्ती टिके देखिया पे एगुड़ा देखि पारिबे। एबे जो कंटेंट धरिका एई नुआ सेशन पे रहइबो एटा एई फोल्डर भितर अछि न्यू 2026 बैच। ओके, सो एथरे जमते को कहली जीके रो हमें जीके इंग्लिश और ओडिया एजुकेशन सरीले स्टार्ट करियो। ओके, बट तार टेस्ट करिका अपलोड हे चलथिबो जदि आपण चाहउछती आगुर ताको दवा पे टेस्ट करिका आपण दे परिबे। किंतु एटा हमें प्रथम चारटा टेस्ट अपलोड हे छि एज यू नो आपनकर 100 टा टेस्ट अछि। ओके, जीके रे 100 टा, ओडिया रे 100 टा, इंग्लिश रे 100 टा, ठीक अछि। तो ये जो फर्स्ट चारटा टेस्ट एटा एमती पीडीएफ फॉर्म रे अछि। ओके, देखे भी एटा देखे सरला परे बो जण क्वेश्चन आंसर फॉर्म रे पढिया पे चाहउछन्ती तो पीडीएफ रे आपण पढि परिबे सेटा ऐप रे। ओके, ए पीडीएफ रे आपनकर निज एक्सेस पे, ठीक अछि। तो एटा प्रिंटेबल नो कि शेयरेबल नो, प्रिंटेबल और शेयरेबल मटेरियल्स गुडा रहिबो सेगुडा आपण ग्रुप रे शेयर हबो। तापर आपण को इच्छा से गुडा ओपन मटेरियल्स गुडा थिबो, सो इफ यू वांट यू कैन प्रिंट देम। जो माने ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अछंती आ चाहउछन्ती मु लाइव टेस्ट देबी तो लाइव टेस्ट दे परिबे। एटा एक्चुअली जो चैप्टर टेस्ट एटा रिवोल्ट ऑफ 1857 परर। ओके, सो दीज आर बेसिकली सेट्स, 4 सेट्स एथरा अछि। ओके, इफ यू कैन जस्ट सी एटा मोर मास्टर अकाउंट तेणु मोर देखे दूची एटा आंसर टा कोन, बट आपनकर अकाउंट रे एटा टेस्ट हिसाब रे आसीबो, आपन देबे टेस्ट माने ये सब हला 1.5 आवर्स टेस्ट देखंतु। टेस्ट ड्यूरेशन ओके 2.5 आवर्स 150 मिनिट हला 300 मार्क आउ जेमती आपनकर नेगेटिव मार्किंग रोची। ओके, से हिसाब रे एटा कराइछ +2 -0.5। ओके, राइट। सो एमती आपनकर सब जाक टेस्ट आपन देखो जो माने रेडी होचंती एटा टेस्ट आकार रे माने दे परिबे आपण एज ए टेस्ट। ओके, आपण ऐप रे आपण का रैंक करिका भी आपण जानि परिबे। आउ गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिंस हला ए जो एमसीक्यू टेस्ट करिका अछि आपनकर एगुडा सब सेट हेची अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स पे। एमति न कि थरे दे देले आउ सेटा हे गला नै, हमको रिवाइज बहुत थरा करे पड़े। तो थरे टेस्टटा देली मोर 300 मार्क रु 180 रहला त मु चेष्टा करी फोन तक केमती ओके आउ थरे पढिबी जोटा भूल हेची आउ थरे टेस्टटा देबी। सेटा जेतले मोर पीक परफॉर्मेंस को आसी 240 250 260 त जानली कि हां ठीक अछि जेते इच्छा हो जेते थरो से टेस्ट को दे पारे। से पे जेते टेस्ट आपनकर अपलोड होबो जीके रो, ओडिया रो आउ इंग्लिश रो एटा सब अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स पर्यंत सेट करा हिच। ओके, सो ऑलरेडी एथरे प्रथम चारटा टेस्ट आपनकर अपलोडेड अछि आउ सही टेस्ट रो पीडीएफ सुडा भी अवेलेबल अछि। जो माने को नै क्विज हिसाब रे मु दपि चाहू मु गोटे क्वेश्चन बैंक हिसाब रे पढिया पे जाऊ एटा क्वेश्चन ता तळे आंसर ता पर एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन ता सबटु इंपोर्टेंट। ओके, एक्सप्लेनेशन ता सबटु इंपोर्टेंट। तो एगुडा टेस्ट गला जो एजुकेशन रो एटा तो ऑलरेडी देखौतली माइक्रो सिलेबस सुडा इठी रहगो। प्रथम वेस्टर्न एजुकेशन थोर जो थोर हम स्टार्ट करबा ता माइक्रो सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड अछि। सॉल्व पीआईक्यू जोडा हम आपन देखैथिली आउ जो क्वेश्चन बैंक फॉर्म रे मु आपन को कहउतली। ओके, कि जस्ट
तो जोटा हमें क्विज रे देखिथलु जेमतिया एग्जैक्टली सेमती आपण पीडीएफ रे एटा पाइबे। ओके बहुत जन एमती थांती कि हमें एटा प्रिपेयर करिवु केमती ना क्वेश्चन देखिवो ता आंसर कोन और मोस्ट इंपोर्टेंट हला ता एक्सप्लेनेशन काना एक्सप्लेनेशन तो अलग क्वेश्चन आस परियो डिटेल एक्सप्लेनेशन दोची जति के दरकार। ओके तेनु सेटा सही हिसाब से मु पूरा 300 टा क्वेश्चन एठी पढिली तो आपण को इच्छा प्रथम कि एमती भी आपण थरे पढी कि ता परे देई पारि। ओके 150 टा क्वेश्चंस 300 मार्क तो सबु जाक टेस्ट रो स्ट्रक्चर एया रही इंग्लिश रो टेस्ट भी से ओडिया रो टेस्ट भी से एक्चुअल परीक्षा रे कोन हो सबथरु 50 टा क्वेश्चन पड़े टोटल 150 टा क्वेश्चंस। ओके सेटा मु भाबुची जति इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा हला किंतु जा देइची नोटिस रे कि सेटा कमिशन डिसाइड करिए कमिशन डिसाइड करले से आई मोस्टली करे 50 टा ओडिया रो क्वेश्चन 50 टा इंग्लिश रो क्वेश्चन 50 टा जीके रो क्वेश्चन 150 क्वेश्चन 300 मार्क 150 मिनिट। ओके किंतु एठी जो हमें आपण को दोचु टेस्ट करे त माने कोन ईच सब्जेक्ट रो 50 टा क्वेश्चन आछि किंतु एठी आपण को ईच टेस्ट रे 150 क्वेश्चंस मिलिबो ईच सब्जेक्ट जेंते एटा चारिटा प्रथम टेस्ट दिया है एतरे 150 क्वेश्चंस माने 600 टा क्वेश्चन हे गला आपण को रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड द टाइम ओके अराउंड इट ठीक है। सो जदि आपण को खाली एजुकेशन पढ़ी पढ़ी टिके बोर लागिवो ताले एक गुडा भी आपण देखि पारे। ओके काहे ना बाय द टाइम एजुकेशन सरीबो ए तीनटा जगह सब्जेक्ट रो जीके इंग्लिश आ ओडिया रो सबु 100 टा क्वेश्चंस अपलोड हे सारी थिबो सो दैट जतले हमें पुनी एई सब्जेक्ट रो स्टार्ट करी हमें जल्दी जल्दी फिनिश करि पारी। ठीक अछि एम दीटा रोची हमरो कोर्स रो गोटे तो हला कोर्स प्रॉपर्ली आपनकर कंप्लीट हबो सेकंड हला आपनको आंसर राइटिंग टा प्रथम रु जेमती एवरी डे एवरी क्लास रे सेते आधा घंटे आंसर राइटिंग पे रखाई छ। ओके 1.5 रु 2 आवर्स रो क्लास 2 आवर्स करंतु काहेना बुझिया पे पड़िबो दी प्रकार रो पिला जनरली एथर लास्ट ईयर बैच रे भी सेमती हेतला जने जो माने भल्लो रे बीएड करिका करछन माने ताकर एजुकेशन रो कांसेप्ट क्लियर अछि से माने ताको क्लास थ्योरी क्लास रे ओके जहा ताकू लाभ हो ताकर मेन जिंसडा हला राइटिंग एंड इवैल्यूएशन लेखि की आज वेस्टर्न एजुकेशनल थॉट पढ़ाला आइडियलिज्म पढ़ाला आइडियलिज्म ऊपर एई चारिटा क्वेश्चन इंपोर्टेंट एटा हला ता मॉडल आंसर एमिति आपन को लिखिबार अछि सेटा आपन तापर लिखि की पठेबे इवैल्यूएट करिवे दैट इज वेरी इंपोर्टेंट और जो माने पढ़ी भी नांती ठीक रे तो ऑब्वियसली से थ्योरी क्लास भी आपन को दरकार मटेरियल दरकार जोटा ऐप रे मटेरियल सेटा भी दरकार ग्रुप रे जोड़ा ओपन मटेरियल दिया हो सेटा भी दरकार। ठीक अछि सो डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स ना। ओके काहे ना बहुत जण एमती थिबे जो माने सिविल सर्विस रे प्रिपेयर करथिबे तो से माने टिके सेफ साइड रे अछन काहे ना से लेखा लेखि करछन। ओके जो ने प्योरली एमसीक्यू एग्जाम से प्रिपेयर करछन सेटा गोटे इशू रहे कि हमें लिखिया पे पड़िबो और टाइम रे लिखिया पे पड़िबो टाइम में बहुत प्रेशर थिबो ताले मो क्वालिटी ऑफ आंसर भी एपट सेपट हो। ठीक अछि तो सेटा जेमति प्रथम रु आपनकर प्रॉपर रहू सेटा जेमति आपनकर ओके अफेक्टेड न हो। ओके सेटा ता ऊपर हमें मेन कंसंट्रेशन करूछु। ओके सो जस्ट आउथरे रिपीट कर देबे आपनकर कि हमें संडे दिन दैट इज 23 अगस्त रो लाइव क्लास करिका स्टार्ट होछि। ओके एटा आपनकर इवनिंग बैच रहबो तेनु जो माने हमर टीचर्स अछंती आपण स्कूल रो आसी की प्रॉपर्ली रेस्ट नेला परे देन यू कैन स्टार्ट 6:30 रे धरन तो आपण क्लास कोनोसी कारण जो करि भी पाउ नांती ताले नेक्स्ट डे सेटा सकाळे अपलोडेड ही गेथिबो। ओके ता रिकॉर्डिंग्स भी आपण देखि पारे जे आपको टाइमिंग रो इशू होछि। ओके सेमिति बहुत कोर्स रो मैक्सिमम पार्ट ऑलरेडी कवर हे सारछि लास्ट ईयर बैच ताकर वीडियोस भी आपण देखि पारिबे अवश्य सेटा गोटे अलगा फ्रेम रे कराइथिला। ओके एबे ऑब्वियसली ऐप सपोर्ट अछि आगुरु हमें YouTube प्राइवेट रे करथि मन 2021 कथा कहूची। ओके बट एबे से सब जिंसो ओके फार बेटर टेक्नोलॉजी आउ ऐप थ्रू रे सेटा होची। ओके सो एनी डाउट्स रिगार्डिंग द एग्जाम की पढ़िया रे आपण को किछि हेल्प दरकार किछि ओपन मटेरियल दरकार ताले यू कैन व्हाट्सएप मी
जो नंबर टा स्क्रीन रे दउची 7684054656. So I wish you all the best for your preparation. Namaskar.